When it comes to water, the region surrounding the Sambhar Salt Lake in central Rajasthan has a characteristic that is specifically its own. Whilst there are a few scattered sources of fresh water, most of the wells and pumps have water that is too salty to drink. This means that women, whose job it is to fetch the water, have to walk many a mile just to get 2 or 3 pots. Prayatna is an NGO working in the area since 1986, and when they decided to take up water as an issue, they began with a source that already existed. That is, they facilitated the cleaning up of a pond between 2 villages and raised the height of the well that was in it. पूरा दोनों गांव का जानवर तो पीता ही नाडी में पानी भी के अलावा जो आथुणा राजस्थान हूँ जो लड़ियाँ चरावाड़ा आता मारवाड़ हूँ बस सब ई रास्ता हूँ निकलता तो बैंक की भेड़ा के वास्ते भी अठे ही पानी मिलता और कठे ई एरिया में इन वालों बोला ये पूरा एरिया ने बीमा सब बढ़िया पानी लंबा समय तक टिक बड़ी नाडी। तीसरो कारणों के गांव को इमें माना दोनों गांवों को अच्छो सहयोग मिले और फिर मैं अठे देखियो कि अठे लोग पानी नाडियों सीधो भर ले जावे और पीवे। कुओं तो बना रखियो बे पर वो कुओं बरसात आती जब पानी के अंदर डूब जातो वो कुओं और बाद में तालाब से सीधो पानी भर ले जाता। पर जब गाँव के साथ बैठ बात करी तो वह क्यों कि ई कुआ को और कोई विकल्प को न तो एक सब बैठ आपस में विचार करियो तो ई कुआ ने ऊपर उठावा की सोची तो इन्हें कम से कम भी मैं 8 फुट ऊपर उठाया। अब ऊपर उठाया बाद भी सोचो कि अब अठ पानी लेबा क्या ना आई तो पर जी साइड कम हुई आज कटियोड़ी बी साइड एक रास्ता बनाया को और रास्ता बनाबा अब कितो ही पानी इन नाडी में आई तो कुआं आर औरता पानी ले जा सके ई रास्ता में आर। The areas surrounding the Sambhar lake can sometimes offer a surprise. As this shot shows, while one side of the road has fresh water, the other side has salty. A similar situation exists in Mammana. This is the only hand pump in the village that has fresh, sweet water. All the others have salty water. Since the local sources of water are so unreliable, there have been attempts to bring in water into the villages through pipelines. Whilst these attempts were very well-meaning, they haven't been particularly successful. पानी आवे सा 2 कोस पानी आवे अब सोचो को 5-4 गांव अगर जो जावे तो 3वां दिन उठावे पाइप तो वो गाड़ी में पाइप में पानी बड़ू बेराम पानी में बड़ू बंद हो जा रहा आगन पुगे कौन पानी पाइपलाइन करी जगह पर फुटोड़ी बढ़िया के लाग मान ज्यादा उंडो खोदा तो खरा जा। इन वाला एरिया में तो कठे भी कोई भी एरियो इश्यू नहीं है जेठा पंप कर सको आप पानी का और जेठे जेठे पाइपलाइन बिछाई है सरकार या कोई भी तो वह ज्यादा लाभकारी नहीं रही। आवाज तो आए जा पानी नहीं आवाज नहीं एक नहीं आ थोड़ा यही पड़ता बड़ा मटके ले ले रहे तो आधी बार तो खैर है आदमी ऐसा का पानी यही कोन कुआ दे राम कटई सारा पानी है। The other solution is to build storage tanks. These tanks can also be coupled with terraces and catchment areas to harvest the rainwater. When the rainwater is spent, they can be used to store water brought in by tankers. A tank can be built either for a whole community or for an individual family. While community tanks are cheaper, they haven't been particularly successful because the responsibility for maintaining them is divided. वो श्रम बनायो जनाड़ा बरसात को पानी आयो वो बरसात आओ पानी सुन पतो ही के मान भरी और मान लकीर और तो पिंडो फूट गयो जो जनाड़ा पानी डटियो को पानी तो कोना चाटी इधर तो तसमरता बारे मिलना। Taking all these factors into consideration, Prayatna decided to experiment with individual tanks in the Dobri village. As the people in the village have mud houses, these tanks are not coupled with terraces to catch the rainwater. They have to be replenished by tankers, bringing in fresh water every 2 months or so. As the water is readily available,
it eases the burden of the women. These tanks have a lifespan of over 20 years, and since people have helped to build them, they are regularly maintained. अब एक टंकर एक मीनू फिर वो निमरदार फिर ला लें 200 रुपया देर अब मैं तो पानी घरों पीऊं और दूसरी लुगाई जा जान बांझो चोर पकड़ ले बैठे बागरिया थोड़ी तो बेचारे पिया रात में मोटे ना ली ले भागती फिर नाडी में पानी दे गया आप चाटी को और तो पानी है कौन मैं पीवा जटू बकरी न पावा फिर पीबे कटू ले आ जाऊं बीमार पड़ जाता जब लीले गाड़ियां भागता तो कतो ननद रहता कर सम्मत रहता सुइया और पानी की सबते अब तो बीमारी तो हटिया. Although the individual tanks have been more successful, Prayatna also builds community tanks in schools and healthcare centers where they can be maintained properly. Also, when tanks are built, the money goes to the villagers. With pipelines and hand pumps, the money goes to contractors and middlemen. तो यान मैं बताना चाहूँ कि गांव जो बतावे और यदि बी की साथ संस्था हो या सरकार हो वो सुनकर काम करे वो ज़्यादा प्रभावी हुए और अकेली संस्था या गांव या सरकार खुद भी आपका मर्जी हो जैसे जहाँ मर्जी काम रोक दियो वो काम ज़्यादा सफल नहीं हुआ. In Rajasthan, water is treated with reverence, and every region has its own wisdom associated with it. If a new technique is to succeed, it has to take into account this local wisdom. It is precisely because of this that tanks and terraces have worked better than pipelines and hand pumps in the Sambhar region. They offer a solution that is local, and instead of giving a false impression of plenitude, they are a reminder that sometimes water can be as precious as life itself.